Assalamualaikum. In the previous video, we discussed about general anesthesia, what are the characteristics of general anesthesia, and mechanism of action of the general anesthetics, and everything about general anesthesia. In this video, we will discuss about inhalational anesthetics. So, what is meant by inhalational anesthetics? You know, okay, the general anesthetic agents will be given through the inhalational route, so through the mask. Now, what are the types? It can be in the gaseous form, it can be the volatile, right? Either these will be in the gaseous form or it will be the volatile form. So gas is the nitrous oxide and the other volatile are halogenated hydroxides. So what are the halogenated hydroxide? How are you going to remember all these names? So we have a mnemonic here, HIDES. From HIDES you can remember H for halothane, I for isoflurane, D for desflurane, E for enflurane, and S for sevoflurane. So why fluorine is coming here? You can see कि fluorine इसमें added होती है because that's a fluoride, fluorine, you know, end पे क्या नाम पे आ रहा है, everyone contains the fluorine. Whenever you see the fluorine, you must think of the inhalational anesthetics. So fluorine, which means this all contains fluoride. That's why we said these are the halogenated hydroxides. So as we are done with the names, mnemonics for HIDES and the nitrous oxide, we will be discussing its pharmacokinetics and pharmacodynamics. So before discussing the pharmacodynamics, you know, speed of induction. Every inhalational anesthetic have a different speed of induction. Few causes the rapid induction of anesthesia and others causes the slow induction of anesthesia. So we will discuss all the factors on which factors this rate of induction depends, which comes under the heading of pharmacokinetics. So let's start with that. First of all, you know, inspired gas concentration and the ventilation. So the most important point you need to know in this is from Big Katzung, which is actually not written in the mini, so I'm just showing it from here. The fractional rise of the anesthetic partial pressure during the induction is usually expressed as the ratio of alveolar concentration, which is Fa, over the inspired concentration, which is F1. Faster the Fa over F1 approaches, 1 represents inspired to the alveolar equilibrium. So faster anesthesia onset will be during. Now what does this mean? आपने एक एनेस्थेटिक एजेंट दिया एक पेशेंट को, तो जितना जल्दी Fa और F1 की रेशो 1 को रीच करेगी, Fa एक्चुअली है कि आपने जो कंसंट्रेशन आपकी एनेस्थीसिया की एनेस्थेटिक एजेंट की है एल्वियोलाई के अंदर, और F1 है वो कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक एजेंट की जो आप गैस का मिक्सचर दे रहे हो उसमें कितनी है. तो जब ये दोनों कंसंट्रेशंस बराबर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली Fa और F1 क्या हो जाएगा, 1, विच मीन्स कि इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड. तो जितनी ज़्यादा किसी गैस की Fa F1 की रेशो जो है जितनी फास्टर 1 को रीच करेगी उतना उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ इंडक्शन होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ इंडक्शन डिपेंड्स. So graphically it is represented right here. This is for the nitrous oxide and this one is for halothane. So if you compare both of these from this graph, you can see कि जो nitrous oxide है उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीप है और वो बहुत जल्दी जो है 1 को रीच कर रही है इसकी वैल्यू Fa F1 की, ठीक है. विच मीन्स कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका क्या होगा, रैपिड ऑनसेट होगा, जल्दी एनेस्थीसिया हो जाएगा, जबकि हैलोथेन जो है उसकी रेशो जो है वो बहुत स्लोली, यू कैन सी कि इन मिनट्स स्लोली रीच कर रही है 1 की तरफ, इवन जा भी नहीं रही, 0.5. सो दिस इज़ वाई हैलोथेन इज़ स्लो एक्टिंग inhalational anesthetic. So this was the first factor, Fa F1 ratio, which tells you about the onset rate of induction. Now the next one is solubility. ठीक है, solubility में मतलब पहले मुझे भी confusion हुई थी, but I am going to tell you what is meant by solubility, and this is not actually lipophilicity.
फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि दिस इज़ लिपोफिलिसिटी, कि जो गैस जितनी ज़्यादा लिपिड बैरियर्स को क्रॉस करेगी उसका ऑनसेट उतना ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए, बट हेयर दिस इज़ लिपिड फ्रॉम दिस सॉल्युबिलिटी वी मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट ड्रग इन द ब्लड. ठीक है. तो यहाँ पे दो बातें हैं. एक तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड के अंदर कितनी है, और द सेकेंड थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट. What is the blood gas partition coefficient for that gas? So I have made a note right here regarding nitrous oxide and halogen. So I have compared these two gases regarding solubility. You know कि nitrous oxide जो है उसकी solubility blood के अंदर कम है. अगर एक गैस जो है उसकी blood के अंदर solubility कम है तो वो blood के अंदर जल्दी आएगी और अपने साइट ऑफ एक्शन पे जल्दी पहुंच जाएगी. ऐसे ही है. तो इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हुई, इसका पार्टीशन कोफिशिएंट कम हुआ. पार्टीशन कोफिशिएंट कम होगा तो इसका रैपिड एक्शन आएगा. ठीक है. तो नाइट्रस ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इन ब्लड इज़ लेस, दैट्स व्हाई इट्स पार्टीशन कोफिशिएंट इज़ लेस. सो बिकॉज ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट इज लेस इट विल रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन रैपिडली एंड इट विल एक्ट रैपिडली एंड विल लीव रैपिडली. सो इसका रैपिड एक्शन होगा और कम ड्यूरेशन के लिए होगा. और जो हैलोथेन है बिल्कुल ऑपोजिट. ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी हैलोथेन की ज़्यादा है, तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होने की वजह से इसका पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होगा. पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये ब्लड के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहेगी. जब ब्लड के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहेगी तो अपने साइट ऑफ एक्शन पे ये जल्दी नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से इसका स्लो एक्शन होगा. और जब जाहिर है कि वापसी के लिए भी ऐसा ही होगा कि जब अपने साइड ऑफ एक्शन से इसने वापस आना है, वापस ब्लड में आना है, फिर ब्लड में ज़्यादा देर रहेगी तो इसकी एलिमिनेशन भी जो है वो जल्दी नहीं होगी. तो दैट्स वाई इसका स्लो एक्शन होगा और ज़्यादा देर के लिए होगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रस ऑक्साइड एंड हैलो. दिस आल्सो अप्लाइज टू द अदर इनहेलेशनल एजेंट्स as well when you compare other with the nitrous oxide as well. So nitrous oxide is the only one जिसकी solubility जो है वो बाकियों से comparatively बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका partition coefficient कम है और rapid action है और कम देर के लिए है. बाकी halothane है, fluorine, sevoflurane and all we just learned from the hides. तो you know उनका ब्लड के अंदर solubility ज़्यादा होने की वजह से partition coefficient ज़्यादा है तो उनका slow action होता है. So this is also a graph, you can memorize it from here as well. कि बाकी सारी गैसेस के नाम लिख के भी ग्राफ बनाया गया है. सो यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है कि किसकी जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिड ऑनसेट है. तो नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर डेस्फ्लूरेन है, फिर सीवोफ्लूरेन, फिर एसोफ्लूरेन एंड देन हैलोथेन. सो दिस वाज रिगार्डिंग solubility. So how solubility of a drug is affecting the speed of induction of anesthesia. Now here we have ventilation rate. ज़ाहिर है कि जितना वेंटिलेशन रेट एक बंदा जो है या जिसको आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है उसका जितना ज़्यादा वो रैपिडली क्या वेंटिलेट कर रहा है तो एल्वुलाई के अंदर एनेस्थेटिक एजेंट उतना जल्दी जाएगा, ब्लड में जल्दी जाएगा तो एक्शन उतना जल्दी आएगा. सो पल्मोनरी ब्लड फ्लो का थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो अगर आप खुद सोचें कि एक एल्वुलाई के अंदर एनेस्थेटिक गैस है और जो कैपिलरीज के सराउंडिंग हैं दी एल्वुलाई उनके अंदर ब्लड जल्दी फास्टली यू कैन से फास्टली मूव कर रहा है. तो यू नो कि फॉर एन एनेस्थेटिक गैस to go into that compartment from alveoli to the blood it would be difficult, the rate of onset would be slow. So जितना pulmonary blood flow ज़्यादा होगा onset of action of anesthetic would be slow. So that's why जब cardiac output ज़्यादा होगी तो pulmonary blood flow ज़्यादा होगा, pulmonary blood flow ज़्यादा होगा तो onset जो है वो slow हो जाता है. तो यहाँ पे एक जब सर्कुलेटरी शॉक होगी किसी बंदे में तो सर्कुलेटरी शॉक में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगी और पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो उसकी वजह से एनेस्थेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा. सो इन सर्कुलेटरी शॉक पल्मोनरी ब्लड फ्लो विल बी लेस, सो इट विल एक्सेलरेट द ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट एंड इट्स सॉल्युबिलिटी. बाकी देयर इज़ आर्टेरियो वीनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, जितना स्टीप होगा, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि उतना ज़्यादा जो है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा एनेस्थेटिक एजेंट का. So these are all the factors. We have discussed solubility, we have discussed the FA. इसमें यही वाली जो हेडिंग दी है इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर, इसमें हमने पहले डिस्कस किया है FA F1 की रेशो. बाकी वेंटिलेशन रेट वी हैव डिस्कस्ड, पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड देन आर्टेरियोवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Now there is elimination. So कि there were only two routes for elimination.
फर्स्ट gaseous form है, volatile form है, so these can be expired out like these we inhaled, so we can expire these. That's one route for all other anesthetics except halothane. So halothane के लिए exception है कि it is metabolized by liver enzymes इसको मेटाबलाइज करेंगे और वहाँ से इसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन है. सो यू नो कि अगर ये लिवर के थ्रू इसके मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो यू नो इट विल कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी. वी विल डिस्कस इट इन द टॉक्सिसिटी in the next video. So in the next video we will discuss these topics, you know कि बाकी हमारा इसमें सिर्फ ये रह गया मैक, second gas effect, emergence phenomena, and the effects of anesthetics on the different systems of the body. Thank you.